Good morning, students. Nan verb के last parts discuss को कम चुन सरा the verb न पाती शुरू मुंग verb start करें as an open class. न verb के मुंग सरा two parts चिकम दे दापत शुरू या two kinds चिकम दे उसा verb मुंग सरा यो di-transitive पाती दे verb और यो mono-transitive दे. Di-transitive the meaning नंता सुधा खबर clear की di से तो di मतलब दे two मतलब da is the given object sui two objects sui no the objects mun that the further explain kli the yo among sara direct objectival ba indirect objective yani पर transitive verb के among sara objects द्वारा जी यो among sara direct यो ba indirect e.g. मिसाल बताओ तो तमोली कुछ she gave me a diary उस पदी के among sara me जी कम दे दा indirect object because the diary is in the hand of her डायरी दी सरा दा बता चिकम दे मान से कइदा डायरी रागी डायरी चिकम दे दा मुंग सरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी चिकम दे ज इनडायरेक्टली चिकम दे मान दा शी से कइदा डायरी रागी मुंग सरा नो पदी सेंटेंस के मुंग सरा मी और डायरी चिकम दे दा द्वाना वर्ब्स की भूमि पर के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरी चिकम दे दा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दा दो पर के ऑब्जेक्ट्स मुंग सरा रागी दी आ वर्ब पर के सी सिंगुलर मुंग सरा सी द यो वर्ब दे पर के मैन वर्ब शी गेव मी अ डायरी Nupadi ki she subject should give verb second form should me and direct object should or direct chikam de da mun sara direct object should da sha mun sara bya mono-transitive chikam de mono mun sara the meaning la pata lagi like for example we can say we are monotheist we believe in one god no da sha chikam de mun sara the mono la da pata lagi chi mono matlab de single ya one no mono-transitive ke mun sara verb single भी और object को mun sara you भी और पढ़ाई के चिकम दे objects बदुई और mono-transitive verb के mun sara object you भी it has always a single object ही खुदा object को mun sara direct object है clear ना for example we write a book मुंग यो किताब चिकम दे लिखो हम एक किताब लिखते हैं नो पदी के mun sara we subject है write man verb दे और दा एप के article दे और दा चिकम दे mun sara object दे दा शा mun sara पदी के mono-transitive की चिकम दे दी के mun sara object सी single भी होता पर direct object है mun sara clear that we write a book पदी की we mun sara subject है write man verb दे ए article है book चिकम दे दा mun sara direct object है नो पर verb की जना कम two parts पार की di-transitive और mono-transitive इंतहाई important to mun sara पढ़ाई के objects to the यो direct है और indirect है और पर mono की चिकम दे object mun sara one है और वहाँ पर single object है considered की बड़ा है thank you so much